what is happening over here? Okay, right. So we were discussing what we were discussing. We were discussing the chapter carbon and carbon compound, right? So in this chapter, what we have completed last time, कितना हम लोग complete हुआ? I'm going to open that PDF. Okay, so here we have to start with this chain, branches, and rings, right now. So if you look at the carbon compounds always exist in these forms, right now. They exist in straight chain compound, branch chain compound, and ring compound. Now, straight chain compound. What is the straight chain compound? Which is right now the compound which is uh, do not have any kind of what attachment, right now. What is a straight chain compound? The compound or the carbon compound which do not have any kind of attachment is called as what? Straight chain compound. If we talk about branch chain compound, what is the branch chain compound? The compound which has branches. Now, if you see branches, right now, ये बहुत important है बेटा. If you talk about branches, right now, मैं example लिखता हूँ बेटा. If I ask you, what is this straight chain compound means what? Like this. Let me explain you first, then I will ask you the question. Right now, straight chain compound means what? Straight. There should not be any kind of attachment. कोई attachment नहीं रहेगा, खाली straight chain compound रहेंगे. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? What? Straight chain compound like CH3, CH2, CH3, right? It is also a straight chain compound, right? Branch chain compound, the compound which is having a one or more than one attachment, like this C, 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 C. If I put C over here, so it is having a branch, or you can say one attachment is there. So such kind of compounds are called as what? Branch chain compound, right? And the compound which is what? Close, right now, close compound. Close compound means what? They do not have two end, right now. In straight chain compound and branch compound, there is two end, one end and two end. Two ends are there, right now. But if you talk about ring compound do not have any kind of end, right now. So they are what? जहाँ से start हुआ वहाँ से ही वो खत्म हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा? Such kind of compound which do not have any kind of ends, or we can say that closed chain compounds are called as ring compound, right now. Like this cyclohexane, right? ये नई पेन नहीं चल रही, एक मिनट. Right, cyclohexane. इसको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, ये cyclohexane हो गया. Cyclobutane, right? Cyclopentane. So these are nothing but a closed chain compound. These corners are nothing but a carbon only. Yeah? These carbon. Cyclopentane, you can write like this also, right? Now we have to fill the what? We have to fill the carbon as hydrogen over here. We have to fill the valency, right? ना जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? H होता है. यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है. So because we have two bonds over here, so we will add 2 hydrogen. राइट, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, वो बताऊंगा. तो पहले ही समझ के लो what is straight chain compound, what is branch chain compound, what is ring compound, right? Now the compound which do not have any kind of attachment is called as straight chain compound. The compound which has one or more than one attachment is called as branch chain compound, and the compound which is have closed structure, or we can say we do not have any kind of ends, is called as ring compound. समझा? Understood? Difference between chain compound Yes, sir. and or rings? Yes, Yes, student. sir. आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा. So do one Yes, thing. sir. आप एक मिनट बेटा. Do one thing. Chat box में आप बता दो.
एक बार बोलो बेटा, आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडियो में बोलो बेटा, अंडरस्टूड और नॉट? ओके बेटा, Yes, sir. ओके बेटा, अभी आ रही है आवाज। सो straight chain compound, branch chain compound, and ring compound. And now tell me, this is an example of what? Straight chain compound. Straight chain compound, right now? Because there is no attachment over here, right now. If I write this one, CH2, 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 right? Sorry, CS3. So this is an example of straight chain compound, right? Now tell me, CS3, CH3, CH, CH2, and CS3. So This is a branch very good branch because we have branch attachment over chain here. compound. So this is a branch chain compound. How to write this formula? I will let you know. मैं आपको बताऊंगा. Don't worry. Right? ये हो गया branch chain compound. Right? Next example. पेन क्यों नहीं चलती? CS3, CH2, CH2, and CS3. Now tell me, it is a branch chain compound. Yes. Yes, sir. Branch chain compound. Branch chain compound. What about other student? Only one student is there. बाकी लोग का क्या मानना है? ये ब्रांच चेन कंपाउंड है या स्ट्रेट चेन कंपाउंड है बेटा? आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, राइट? टेल मी, Sir, ब्रांच branch. चेन कंपाउंड और व्हाट अबाउट अदर? मैथिली, मनस्वी, शिवांगी, asking question, branch chain compound or straight chain? I'm not asking the respond me, right? Don't give thumbs up. Straight chain or branch chain? Unmute yourself and Branch. answer me. Okay, branch. Yuraj? Branch. Branch. Manasvi? Yes, sir. Okay, all are wrong. This is not a branch chain compound, right? अब ब्रांच चेन क्यों नहीं है, पहले ये समझो. ब्रांच बेटा कब होता है? जब आपकी जो ब्रांच होंगी ना, वो ब्रांच जो है वो बीच में आएंगी, सेंटर में. आखिरी कार्बन के अगर आपके ऊपर रहेगा तो वो ब्रांच नहीं होंगे, बिकॉज ये चेन है ना, स्ट्रेट है. मतलब स्ट्रेट मीन्स व्हाट? ये ऐसा चल रही है कंटिन्यूअस में. दिस इज अ कंटिन्यूअस ओनली. दिस कार्बन चेन इज व्हाट? कंटिन्यूअस ओनली, राइट? अगर मैं इसको ऐसा ऐसा कहीं पे भी लेके जाऊं, राइट, कार्बन कार्बन, राइट, so ये continuous है. So this is a straight chain only. This is not a branch chain compound, right? When you will say branch chain compound, अगर एक चेन कंटिन्यूस चल रही है, राइट ना, एंड उसके बीच में कोई चीज बाहर निकल रही है, one attachment is there, then we will say that this kind of compounds are what? Branch chain compound. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So continuous में अगर कार्बन की चेन है, then you will say that it is a what? Straight chain compound. उसको कैसा भी लिखा हो बेटा, ये सी सी सी, देखो मैं यहाँ लिखती जा रहा हूँ, सी, मेरी मर्जी से लिखती जा रहा हूँ, सी, फिर सी, राइट? अब आपको कोई पूछेगा क्या ये स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है, सो आई विल से स्ट्रेट चेन कंपाउंड. अंडरस्टूड? Yes, sir. बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ना. देखो बेटा कंटिन्यूअस है कि नहीं, कहीं पे भी लिंक टूट रही है क्या? Yes, sir. नहीं. Understood? So such kind of compounds are what? Straight chain compound. Now let me explain you another thing over here. This is what? Straight chain or branch chain? बिंदास Sir, बोलो बेटा. branch. Wrong to wrong. Branch, correct. This is a branch. एक ही बच्चा आंसर करेगा अच्छा नहीं है बेटा. You should respond me. Okay. So यहाँ पर branch chain. Okay, very good बेटा. Now tell me, ये क्या है? What is it? Branch chain or straight chain?
Respond me, all of you. I want answer from all of you. You can use chat box of Zamir sir 2 number right now. You can answer me over there also. If you don't want to unmute yourself, respond me fast. I don't have time. I'm asking that what is this? It is branch chain compound or straight chain compound? Sir, Yes. अभी आप लोग बोलेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कौन बोल रहा है. Yes. One by one answer me. मनोमय आंसर दिया है ब्रांच. वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट वन. branch. Okay, branch मैथिली. Very good. Next one. Manaswi Swarangi branch. Okay. What about Manaswi and Yuvraj? Yuvraj, are you there now? Manaswi, Yuvraj, respond me fast. Yes, sir. Loudly. I'm not getting your answer. Yes, sir. Yeah. What is your answer? Branch or straight chain? Branch. Branch. Okay. Yuvraj. Yuvraj is there or not? युवराज बेटा अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो आई विल कंप्लेंट अगेंस्ट यू दैट ये स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है. राइट. वो वीडियो ऑन करके अच्छा गायब हो जाता है. ओके बेटा ठीक है. रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा ना तो अच्छी बात है युवराज. ओके आप सभी लोग रॉन्ग है. ब्रांच नहीं है वो. दिस कंपाउंड इज नॉट ब्रांच कंपाउंड. जो मैंने बताया था आपको CH3 इज नॉट. दिस इज नॉट ब्रांच. कोई बताएगा व्हाई दिस इज सो? सर शायद से वो CL Yes, use because किया. of Cl. What we need now, we need only carbon compound. What we need only Carbon carbon compound. compound. Carbon chain should be there. Carbon attachment should be there, right now. If carbon attachment is there, we can say that that is branch chain compound, right now. If carbon apart from carbon other attachment is there like bromine, chlorine, any kind of attachment is there, then we will say it is not branch chain compound, right now. It is not a branch. It is not a branch. To explain you, let me take an example. देख बेटा जैसे एग्जांपल ट्री तो देखा होगा आपने. ट्री देखा है आपने? Yes, sir. ट्री में जैसे एग्जांपल ये ट्री है. एग्जांपल अभी इतना अच्छे से नहीं बनाऊंगा मैं. राइट. समझो एग्जांपल ये ब्रांचेस के साथ ऐसा. राइट. दिस इज अ ट्री. राइट. समझो ये ऐसा कुछ ट्री है. राइट. दिस इज आवर ब्रांचेस इजंट इट? दिस आवर ब्रांचेस. Yes, sir. अच्छा इस पे यहाँ पे ब्रांचेस पे लीव्स आती है. लीव्स लगी है. राइट. लीव्स है यहाँ पर ब्रांचेस में. यहाँ पर एक मैंगो है लटका हुआ. समझो एग्जांपल एप्पल है और मैंगो जो भी व्हाटएवर. राइट. सो दिस इज अ फ्रूट. दिस इज लीव्स है ना. यहाँ पे फ्लावर है. तो ये जो फ्लावर है, फ्रूट्स है, लीव्स है, क्या उनको हम लोग ब्रांच बोलेंगे? क्या हम लोग लीव्स को, फ्रूट्स को, no, we can't say fruits, leaves and right now these kind of things branch. हम लोग उनको branch नहीं बोलेंगे. Why? Because they are not branch. So branch क्या है फिर बेटा? Branch क्या है? Branch is the thing which is connected with what this right now, which is made up of what we can say wood. जो लकड़ी से बना हुआ है, कनेक्टेड है, लकड़ी से बना हुआ है, सेम होना चाहिए. जो जहाँ से स्टेम से स्टार्ट हुआ है तो वो आगे भी वही कंटिन्यू होना है, उसी से बना है. फ्रूट जो है वो लकड़ी से नहीं बने हुए, है ना. फ्रूट से, लीव्स से, दीज आर नॉट, है ना, लकड़ी से नहीं बने. तो वैसे ही कार्बन की अगर चेन की मैं बात कर रहा हूँ तो कार्बन की ही चेन कंटिन्यू होना चाहिए जो ब्रांच में जा रही है. सो अगर ब्रांच अगर कार्बन का होगा, मतलब अटैचमेंट कार्बन का होगा, देन वी विल से इट इज अ ब्रांच. और अगर अटैचमेंट कार्बन के अलावा किसी और चीज का होगा, देन वी विल से इट इज अ what? It is a attachment. It is not a branch. Understood? Yes, sir. Clear? And ring compound, as I told you, the all close
closed type of ring, right? Now, closed compounds are nothing but a ring compound, right? Now, which do not have any kind of ends. अगर ends नहीं है इसका मतलब क्या है वो लोग ring compound कहलाएंगे. Now, how to write the structure? Structure कैसे लिखना है, right? ना? So if you want to write, right? ना, you know this methane, ethane, propane, butane till how much you know? You remember? Have you learned this alkane, name of alkanes? किसको याद है? कितने को याद है? अल्केन के नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन. किसी को याद है या नहीं है? नो सर. नो. वेरी गुड बेटा. नहीं याद है, अच्छी बात है. होना चाहिए, मगर नहीं याद है, होना चाहिए ना. यू शुड रिमेम्बर दिस. ये आपको फ्यूचर में हमेशा लगने वाला है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर योर पार्ट, राइट ना. सो प्लीज लिख लो. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट. मैं आपको क्या करता हूँ, स्क्रीन को शेयर करता हूँ, राइट. व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर करता हूँ. So if only one carbon is there, so one carbon is called as what? Methane. One carbon alkane is called as methane. Two carbon, अभी मैं यहाँ पे मैं one नहीं लिखूंगा, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ. Two carbon is there, then it is called as ethane. Make a note of it right now. Three carbon is there, then we will say it is a propane, right? Four carbon, butane, right? Five carbon, pentane. Six carbon, हेक्सेन. राइट डाउन. अभी जगह नहीं है, आप अपने बुक में लिखते जाओ. आई एम डिक्टेटिंग यू. 6 carbon is there, it is called as hexane. 7 carbon, heptane. 7 carbon, heptane, right? 8 carbon is there, so 8 carbon is called as octane. 9 carbon is there, then we will say it is what? Nonane. And if 10 carbon is there, how many carbon? 10 carbon is there, then we will say it is called as decane. Understood? Yes. Yes sir. Methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane, right? You should remember all these things. Actually और भी ज़्यादा है, 11, 12 भी होता है, but there is no need to remember that one for your means till 10th standard student, right now. आपको वो सब याद करना पड़ेगा 12th में, so there is no need, right now. After 10, 11 is there one undecane, dodecane, tridecane, tetradecane, pentadecane, hexadecane, heptadecane, octadecane, nonadecane and isocene. So ऐसा आपको फ्यूचर में और भी ज़्यादा मीन्स और भी आएगा, आपको वो करना याद रिमेम्बर करना रहेगा, याद करना रहेगा. बट बिकॉज अभी हम लोग 10th पढ़ रहे हैं, तो इन 10th इट इज बेटर टू लर्न टिल 10, राइट ना. 10 नंबर ऑफ कार्बन, आपको 10 कार्बन को याद होना चाहिए. अंडरस्टूड? यस. Yes sir. रिटर्न द नेम. हैव यू रिटर्न? Yes sir. आपकी बुक में 10 तक नहीं है, आई थिंक सो. सो इसलिए मैंने 10 तक लिखा दिया, आपको फ्यूचर में काम आएगा, राइट. अगर रिवाइज रिपीट करना है तो बोलो बेटा, आई विल रिपीट इट. शुड आई रिपीट? Yes sir. Or Can you you have repeat? written 1 carbon methane, 2 carbon ethane, 3 carbon propane, 4 carbon butane, 5 carbon pentane, 6 carbon hexane, 7 carbon heptane, 8 carbon octane, 9 carbon nonane, 10 carbon decane. Methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane, right na? Understood? Written? Yes. Yes. Okay beta. So now how to write the structure, right now? So this is a formula, this is called as molecular formula, or we can say condensed formula, molecular formula.
there are three type of formulas are there to write, है ना? I will explain you किस तरह से लिखना होता है. Let me share the screen. So methane, if I have to write the formula of methane, so molecular formula. What is molecular formula? Molecular formula is nothing but a total number of element present in a molecule. Molecule में कितने element, कौन से element present है, वो बताता है molecular formula. Means what? If I write CH4, this represent that molecular formula. Or methane consists of 1 carbon and 4 hydrogen. How many carbon? 1 carbon and 4 hydrogen. Understood, beta? This is a molecular formula. And this is also a condensed formula. I will tell you how to write condensed formula. It is not given in your textbook, but I have means जो भी important चीज है वो हम लोग को define करना होता है, वो मेरे को आपको explain करना है, जो आपको 10 के level तक पता होना चाहिए. So मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा additional हो क्यों ना हो, तो additional भी बताऊंगा. So now how to write structural formula. Structural formula or open formula, it is also called as open formula. So how to write structural formula? What do we have to do? We have to write the carbon chain. Carbon लिखने का पहले जो भी carbon है, जितने carbon है उसको link करने का. Because here we have only 1 carbon, so I will write 1 carbon, and then we will fill this valency of this carbon by using hydrogen. So how many valencies are there? 4 valencies are there. Carbon की कितनी valency होती है? 4 valency होती है. So I will right now I will attach this carbon with 4 hydrogen atom. क्या करूंगा? कार्बन को क्या करूंगा? 4 हाइड्रोजन से अटैच करूंगा. And this is a open formula, or we can say structural formula of what? Methane. Understood? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Let me show you another example. Ethane. If I talk about ethane, right now, ethane, right now, molecular formula of ethane, MF लिख रहा हूँ shortcut में now, right now, MF, molecular formula of ethane is what? C2H6. What is the formula? C2H6. Now, how to write this formula? So I will give you the general example, right now, CnH2n plus 2. This is a formula for alkane. फॉर्मूला अल्केन मींस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का हम लोग को फॉर्मूला लिखना है. तो हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करके ये फॉर्मूला बनाएंगे, राइट ना? कैसे बनाएंगे बेटा? C is what? 2. C is 2. So what I will do? C is 2, right ना? And H is what? H is 2. N की वैल्यू कितनी है? 2 है. N की वैल्यू कितनी है? 2 है. तो I will put 2 plus 2. So 2 to the 4, 4 plus 2, 6, right ना? So is equal to कहेंगे C2H6. Understood? Yes, समझा sir. बेटा? Yes. Okay, right. So now we have to write this. Yes. Any doubt is there? No, sir. Okay. Now what we have to do? We have to write the structural formula of this compound. So we have 2 carbons. So I will take 2 carbon which is linked together. Right now, I have written over here. Now what we have to do? We have to fill the valency of these 2 carbon by using hydrogen atom. So what is the valency of this carbon? 4 valency. 1 bond is already there. So I will put 3 hydrogen. जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? H होता है. क्या होता है? H. So here also 1 carbon is there. Carbon consists of one bond. So as 4 valency is there of this carbon. So I will put 3 hydrogen over here to balance out 4, right? To make it 4. एक पहले से है तो 3 लगा दूंगा तो क्या आएगा? 4 हो जाएगा. Understood? Yes, sir. अरे हाँ है ना? Easy है बेटा? Understood? Yes, sir. Yes, sir. And this is our what? This is our structural formula. Structural formula. Now one more thing is there, condensed formula, as I told you. So how to write condensed formula? ये जो CH3 जो open किया हम लोगों ने उसको condense कर देंगे. So condense is what? CH3 bond CH3. So this is called as condensed formula. ये आपको future में आपको लगेगा तो आपको पता होना चाहिए what is condensed formula, what is structural formula, open formula. It is also called as open formula, right? And this is molecular formula. Understood?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Third, let me take an example of butane. Third is propane. मैं थोड़ा लंबा लेता हूँ और बड़ा लेता हूँ तो easy हो जाएगा. So butane. Let me take an example of butane, right ना? So butane, the molecular formula of butane would be what? क्या होगा मेरे को याद नहीं. कैसे करेंगे बोले बेटा आपको पता है अभी मैंने. हाँ, butane means what? 4 carbon, right ना? Butane means what? 4 carbon. Yes or no? So I will write C4. Yes or no? H कितना होगा बेटा? Tell me. By using that formula, H कितना होगा? Yes, tell me. Sir, can you repeat? Sir, C. I'm asking here what would be the H, number of H? 1. C4H what? 8. Here C, yes, Eight. H8, isn't it? How? Yes, sir. How can you 2 explain me? into 2 plus 2 plus Yes, 2 into, correct? ये formula में put Two. करेंगे. Yes, very good. 2 into n की वैल्यू कितनी है? जो यहाँ पे लिखी हुई c की वैल्यू जो है वो c जितना है वो वही n की वैल्यू है. n is nothing but this n here. Let me write this. N is equal to, अरे यार, n is equal to number of carbon. n is nothing but a number of carbon. जो भी carbon जितना रहेगा वो n रहेगा. If here number of carbon is 4, so I will put n over here 4. So 2 into 4 plus 4. Sorry, 2 into 4 plus 2, है ना? So 4 to the 8 plus 2 10 आना चाहिए. यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा. Understood? Yes, sir. That's Yes. what I was saying. Sorry. That's what I thought. How like 8 came. I'm not getting your voice, बेटा. युवराज, Sir, I आवाज नहीं आ रही thought बेटा. that only I thought that how 8 came. 10 should come. ओके ओके. 10 H at 10. मैंने मिस्टेक किया, गलती से मैं ध्यान से निकल गया था. एक्चुअल में ध्यान से निकल गया बेटा, इसलिए हम लोग को चेक करना चाहिए. आप लोगों को याद होना चाहिए, एकदम इजी है. आई विल एक्सप्लेन यू. अब डायरेक्ट कैसे करना है, फॉर्मूले के बिना आप डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताऊंगा आपको. डायरेक्ट कैसे करना है तो आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला आपको मीथेन का फॉर्मूला याद है. मीथेन का फॉर्मूला याद है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4, राइट ना? नाउ ईथेन का कैसे बनेगा? कार्बन में अभी आगे जाएंगे, सेकंड पे जाएंगे तो कार्बन में एक ऐड करेंगे, हाइड्रोजन में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? C2H4H6 हो जाएगा. तो प्रोपेन में क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा. ब्यूटेन में क्या आएगा? C4H10 हो जाएगा. पेंटेन में C5H12 हो जाएगा. तो करना क्या है, कार्बन में हम लोग को एक 1 ऐड करना है एंड हाइड्रोजन में 2 ऐड करना है. अंडरस्टूड? तो डायरेक्ट आपको Yes, निकालने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप बना सकते हैं. There is no need to write use this formula. But for your reference, I have given you the formula of alkane, isn't it? Sir, how you got H10? As I told you, na, but for what is the formula of alkane? CnH2n plus 2, right? So C is what? 4. N की वैल्यू क्या है? 4 है. So here I will put 2 into n की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे देख रहा मेरे को 4 है. 4. So I will put 4 plus 2. So solve this. What you will get? Yes, sir. 10. Understood? Yes, sir. Now I have to write the structure formula. How should I write, beta? What I will do first, I will write the chain of carbon, isn't it? Chain of carbon, Yes, I will sir. write. Yes. So what is a? I will write like this straight chain, right now. I can write this much. This is all like this also, right now. ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा. पहले straight chain की बात करते हैं, वरना confuse हो जाएंगे. So I will write straight chain compound, that is CC, right now. 4 carbon is there, which is linked together. Now what we have to do, we have to write, we have to fill the valency of this carbon by using hydrogen atom. Hydrogen atom का use करके हम लोग क्या करेंगे, इसकी valency fill करेंगे. So here the carbon is linked with only one bond is there right now. So the valency of carbon is what? 4. So one bond is there. So how many bonds are left? 3 bonds are left. So I will put 3 hydrogen over here. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटा, कभी भी 4 करना होता है तो 1 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कितनी चीज बची? 3 बची, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे. अंडरस्टूड? Yes, sir. Here this carbon is linked with 2 bonds. So what is the valency? 4, right now. 2 bonds are there. So कितने हाइड्रोजन लगेंगे बेटे यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन. अंडरस्टूड? To complete 4.
valency. Understood? Yes or no? Yes, sir. Here also, tell me, कितने hydrogen लगेंगे? How many bonds are there? Two Two. bonds are there. Right? So 2 hydrogen would be there. Understood? Here, tell me. 3. 3. Very good, beta. Understood? Yes, sir. Okay, beta. So this. Now tell me the condensed formula. As I told you how to write the condensed formula. ये जो H को है combine करके लिखना है. So what I will write? CH3. Understood? ये CH3 हो गया. Link with CH2. Again link with CH2. Link with CH3. CH3, CH2, CH2, CH3. Understood? This is our condensed formula. And this is our what? Structural formula, or we can say open formula. Understood? Yes, Any doubt sir. is there? Any doubt? No, Tell me. sir. No, now you will say me, you will answer me that what, right ना? मैं कुछ भी पूछूंगा आपको आंसर करना है, right? So I have to write the formula of hexane, 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 right ना? Hexane का मैंने आपको नाम दिया है. How many C6H14. carbons? Very good, beta. C6 and H14. C6. H14, right ना? बेटा what do you have to do? You have to 6 add, into 2 मतलब क्या plus करना है 2. आपको? जितना कार्बन है उसका डबल करना है और उसी में 2 ऐड करना है तो H आ जाएगा. जितना कार्बन है उसमें डबल करो और डबल करके उसमें 2 ऐड करेंगे तो you will get the number of hydrogen. Understood? Yes. Yes. So C6H14, very good, beta. Now tell me the structural formula this compound. This is a molecular formula. This is our molecular formula. Now I have to write the structural formula. What should I do? C dash, C dash. Tell me, beta. First C write Sir, 6 carbon, times C. carbon bond. 6 times 6. Very good. I have written 6 C. Right? Sir, then the What you will first, do? sir, then the first one will have 3 H atoms. Very good, because it Second consists of one. what one bond is there. So I will write 3 hydrogen over there. Here 2 bond is there. Two. So how many hydrogen should be there? 2. 2. Very good. Here 2. 2. Very good. Here 2. 2. Here 2. 2. Here 3. very good. So this is our what? This is called as N